Hello all and welcome to another session of EduRoma today. So in the afternoon we talked about essential oils and what is EduRoma. Let me just reiterate and retell you why we have started this video series called EduRoma. So EduRoma is education about aroma, and we have started with a bigger purpose of educating people, and we want that the world has more and more conscious and educated customers and buyers. Okay, so let us start the session on perfumes today. परफ्यूम्स का मतलब क्या होता है? तो इस सेशन में बेसिकली जो 15-20 मिनट का जो सेशन है, हम लोग विल टॉक अबाउट व्हाट इज परफ्यूम्स, व्हाई डू वी वेयर परफ्यूम्स, द सटल आर्ट ऑफ वेयरिंग परफ्यूम्स, and the most iconic perfumes and the perfumers of the world. We also talk about some celebrity perfumers and some celebrities who wear these famous perfumes. So let us start with what is the meaning of perfumes. So perfume का मतलब, जैसे per scent एक word होता है, 1 out of 100 is per scent, वैसे perfume का मतलब होता है कि per fume. Fume का मतलब होता है the smoky, the fragrant smoke. तो हर एक उस air pocket में कितना पावर है, दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ परफ्यूम. जब हम अब परफ्यूम के बारे में हम ये बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि परफ्यूम क्यों पहनना चाहिए या परफ्यूम क्या होता है. सो परफ्यूम इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज एसेंशियल ऑयल्स एंड अल्कोहल इन अ परफेक्ट प्रोपोर्शन, जो उसको ऐसा बनाता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, उसका प्रोजेक्शन अच्छा हो, सिलेज अच्छा हो, एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड. सो परफ्यूम का मतलब हम समझ गए, ये समझ में आ गया कि परफ्यूम क्या होता है. तो ये भी समझना चाहिए, वी शुड ऑल्सो नो दैट एवरी परफ्यूम, नो मैटर विच परफ्यूम इट इज, एवरी परफ्यूम बॉटल हैज 3 नोट्स, टॉप नोट, मिडिल नोट एंड बेस नोट. टॉप नोट वो होता है जब हम कोई भी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, तो जो सबसे पहले जो फ्रेग्रेंस आता है, जो खुशबू आता है, विच स्टेज फॉर एटलीस्ट 1 or 2 hours. अच्छे परफ्यूम में इट स्टेज फॉर 3 hours. एंड इन पुअर परफ्यूम्स इट स्टेज फॉर 15 to 20 minutes. कई बार ऐसा होता है ना, जो परफ्यूम लगाते हैं और ऐसा लगता है कि यार ये तो तुरंत उड़ गया. सो उस परफ्यूम में टॉप नोट ज्यादा होता है एंड मिडिल एंड बेस नोट का प्रोपोर्शन कम होता है. सो परफ्यूम का जो सबसे पहले आधे घंटे जो भी फ्रेग्रेंस आता है, दैट इज मेनली टॉप नोट. उसके बाद जो आता है, दैट इज द बॉडी ऑफ द परफ्यूम, द मेन बॉडी ऑफ द परफ्यूम, दैट इज द मिडिल नोट. वो काफी देर तक लास्ट होता है, एंड जिस चीज के ऊपर परफ्यूम एक टिका हुआ रहता है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स को एक होल्ड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड द बेस नोट. वो ड्राई डाउन के बाद आता है. 6 से 8 घंटे के बाद कोई अच्छा परफ्यूम है तो उसमें ड्राई डाउन तब आता है, दैट इज व्हाट इट स्टेज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. ओके, सो परफ्यूम का 3 नोट्स हम समझ गए. नाउ वी शुड ऑल्सो नो कि हर एक परफ्यूम का अलग प्रोफाइल होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेल परफ्यूम में प्रोफाइल्स होते हैं सिट्रसी, वुडी, लेदर, एक्वेटिक एंड बैल्जेमिक. बहुत अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स होते हैं परफ्यूम के, और सबका अपना एक रीजन होता है कि कब आपको वुडी परफ्यूम पहनना चाहिए, कब आपको सिट्रसी परफ्यूम पहनना चाहिए. सिमिलरली फीमेल फ्रेग्रेंसेज में फ्लोरल होता है, अगेन फ्लोरल फ्रूटी होता है. फीमेल फ्रेग्रेंसेज में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो मेल फ्रेग्रेंस में यूजुअली नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिली एंड फ्रीशिया आर सच एग्जाम्पल्स. सो ये डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल फ्रेग्रेंसेज में, बट ये सब चीजें सेम, बहुत सारी चीजें सिमिलर और सेम होती हैं जो परफ्यूम्स हैं, दैट इज द नोट्स, द प्रोफाइल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज गुड. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, प्लीज यू कैन राइट द क्वेश्चन ऑल्सो. आई कैन ऑल्सो मेक इट वेरी इंटरेक्टिव. दैट्स द बेनिफिट ऑफ कमिंग ऑनलाइन एंड लाइव. ओके, अब हम बात करते हैं कि परफ्यूम में, बहुत सारे परफ्यूम में जब हम खरीदने जाते हैं तो उसमें हम कंफ्यूज होते हैं. किसी में लिखा रहता है कोलोन, COLOGNE, किसी परफ्यूम में EDT लिखा होता है, किसी परफ्यूम में EDP लिखा होता है, एंड किसी परफ्यूम में पाफम लिखा रहता है. तो इसका क्या मतलब है? वी कैन टॉक अबाउट दिस इन मच डिटेल इन द नेक्स्ट सेशंस, बट बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मतलब होता है. कोलोन इज अ परफ्यूम विच हैज वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन. वो सबसे वीकेस्ट, एक परफ्यूम प्रोफाइल का सबसे वीकेस्ट टाइप ऑफ परफ्यूम होता है, जिसको कोलोन बोलते हैं. ओके, एंड कोलोन इंटरेस्टिंगली कम्स फ्रॉम अ जर्मन वर्ड. जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है कोलोन, एंड सबसे पहला वर्ल्ड का कोलोन एक्चुअली में वहीं पे बना था. जर्मनी इज वेरी गुड इन परफ्यूम्स बाय द वे, आफ्टर फ्रांस. जर्मन परफ्यूम्स आर गुड, एंड दैट्स वेयर कोलोन, द वर्ड कोलोन कम्स फ्रॉम. नाउ द वर्ड EDT, जो सबसे ज्यादा मार्केट में प्रेवलेंट है, EDT, इट्स कॉल्ड eau de toilette.
ईडीटी में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है कोलोन के मुकाबले, बट उसका जो एक सीनियर है विच इज ईडीपी और दे पफा का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। लेकिन जो पफा होता है, नॉट द ईडीपी, ईडीटी और कोलोन, इट्स जस्ट पफा, PARFUM, दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड। उसका जो फ्रेग्रेंस है, अगर इफ इट्स द रियल पफा, इट लास्ट फॉर डेज and it lasts for weeks on your clothes, and it lasts for days on your skin. It's that powerful. And the good news is that we have found those kind of parfums or de parfum or de toilette in our brand Blue Tree. So we also talk about which is which perfume. Now let's talk about the body of our message today, which is the art, the subtle art of wearing perfumes. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि वेयर वी शुड अप्लाई द परफ्यूम्स एंड व्हाई, कितना स्प्रेज होना चाहिए, दिन के किस टाइम पे परफ्यूम्स होना चाहिए। देयर आर सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस जिसका एक परफेक्ट आंसर नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। व्हेनेवर यू आर वेयरिंग परफ्यूम, फर्स्टली मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग द परफ्यूम ऑन योर क्लोथ्स एंड लेस ऑन द स्किन। इसके दो फायदे हैं, एक तो इट लास्ट लॉन्गर, एंड दूसरा फायदा ये है कि परफ्यूम इज made up of a lot of alcohol and ethanol also, so it's much more safer also for your skin. So this is one good thing that you should do. Okay, and perfume लगाना कहाँ चाहिए? Now this is the question which a lot of people ask us कि perfume कहाँ पे लगाना चाहिए? So इसका आंसर ये है कि whenever you are applying perfume, there are different types of spray routines. 3 spray routine, 5 spray routine, 7 spray routine and 9 spray routines. Okay, the most common is the 5 spray routine. 5 स्प्रे रूटीन तब आपको यूज करना चाहिए जब आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। पार्टी में बिकॉज यू आर ड्रेस्ड अप, यू आर ट्राइंग टू लुक गुड, सो दिस परफ्यूम्स एड टू दैट एलिमेंट ऑफ लुकिंग गुड। सो 5 स्प्रे रूटीन इज गुड। द 5 स्प्रे शुड बी फर्स्ट ऑन एट द बैक ऑफ योर नेक, 1 and 2. Third should be at the back of your neck. The 4th and 5th should be on your shoulders. Okay, I repeat. The first 2 should be at the back of your ears. The 3rd should be at the back of your neck. 4th and 5th should be on your shoulders. And there's a science behind it, because when you sweat, the sweat mixes with the perfume and it increases its profile. उसका performance और enhance करता है। Back of the neck में जब आप किसी को pass करते हैं, whenever you cross someone, that it leaves a trail. If it's a good perfume, it will leave a trail. Okay, so for that it's good. And on your shoulders it's really good because it also again adds to the projection. Okay, 7 स्प्रे रूटीन आपको तब यूज करना चाहिए जब आप किसी आउटडोर पार्टी में जा रहे हैं। 7 और 9 स्प्रे में, तो 5 तो यहां हो गया, 1 2 3 4 5। 7 में यू कैन ऐड टू योर रिस्ट्स, 9 में यू कैन ऐड टू योर एल्बोज ऑल्सो। Okay, and for women who are wearing dresses, they can also add perfume at the back of their knees. Okay, so these are the 5 spray, 7 spray routines you should follow, because the art of wearing perfume doesn't end here. You should also know according to which season which perfume to use. Garmi mein you should be using more citrusy, aquatic perfumes, and winter season mein you should be using more woody, leathery, smoky perfumes. Okay, because सीजन टू सीजन उसका एक स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। कई बार हमने देखा होगा, ऐसा होता है कि कोई परफ्यूम गर्मी में बहुत अच्छा लग रहा है और ठंड में पता नहीं मजा नहीं आ रहा होता है, या उल्टा होता है कि कोई परफ्यूम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और अचानक से हम उसको यूज कर रहे हैं एंड वी स्टार्ट टू लाइक दैट परफ्यूम अ लॉट। वेल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नोज एंड ऑन द सीजन. So this is also an art to pick the perfume according to the season. Okay. Now, when we are talking about us, more Indians and our experiences. तो बचपन से, if I talk about my perfume experience, I used to love perfumes. When I used to go to my nani ghar, my mama ji and my cousins used to wear very good perfumes, and then my dad also. So जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे, I remember जब मैं बहुत छोटा सा था, so हम लोग कहीं पे भी बाहर जाते थे तो मेरे लिए वो बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होता था कि सब रेडी हो गए, नाउ परफ्यूम लगाएंगे. एंड आई यूज टू सिट एंड मम्मी आती थी एंड मम्मी हाथ बोलती थी ऊपर करो एंड परफ्यूम स्प्रे करती थी एंड आई यूज टू लव इट आफ्टर दैट. सो बचपन से जो हमने परफ्यूम के लीक्स देखे हैं इंडिया में, आई विल शेयर अबाउट दैट.
सो एक लीग ऑफ परफ्यूम्स होता है जो थोड़ा सा आपको किसी भी सुपरमार्केट में एफएमसीजी में मिल जाता है. आपने सुना होगा परफ्यूम्स अगर आप बचपन से यूज करते हैं तो चार्ली एक फेमस परफ्यूम हुआ करता था. 500-700 रुपीज के रेंज में आता था. व्हाइट कलर का बॉटल होता था. फिर एक सिगार एक बहुत फेमस परफ्यूम था उस टाइम पे. आई एम श्योर लॉट ऑफ यू परफ्यूम लवर्स आपने उस सिगार का बॉटल भी देखा होगा. इट यूज टू बी लाइक सिगार्स. तो और एक पासपोर्ट और ये सब टाइप के परफ्यूम्स आते थे जो उस लीग में परफ्यूम थे. देन देयर इज अ डिफरेंट अनदर लीग ऑफ परफ्यूम्स जो आता है अपना फॉर एग्जाम्पल Gucci, Armani, Burberry, Calvin Klein, Euphoria. So these are all the famous perfumes. Bulgari Aqua. By the way, this bottle of Bulgari Aqua is one of the most iconic bottles loved by everyone throughout the world. Okay, so different types of जो perfumes होते हैं worn by different people on different seasons. So that is the art of the wearing perfumes. And so we have talked about the art of wearing perfumes. Now let's also talk about how these perfumes are crafted. Okay, something a little more important than how movies are also made. So जैसे movies world में जब movies बनाते हैं, so there are directors like Christopher Nolan and Martin Scorsese. Perfume world में there are master perfumers which are called the nose behind a perfume. I repeat, जब कोई master perfumer किसी perfume को बनाता है तो we call it the nose behind that perfume. So there are some famous perfumers such as Alberto Morelia who created the iconic perfumes such as Acqua di Gio Profumo. And then there's famous iconic perfumer called Francis Cogdigian. So he's the perfumer which creates bottle which is on the third league of perfume जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, which is the top class, the top league, the Tom Ford, the Sospiro, the Cogdigian, the Baccarat Rouge. So all these perfumes come after 20-25,000 each bottle, which is on a different league, which is not very prevalent in the market. And when you apply these, then you realize what a single spray of perfume can do for you. Okay, so pretty interesting how perfumes work and the science of these different types of perfumes. Okay, so let's talk about some perfumes that we have in our league. So this is one of my favorite go-to perfume called Ventus. Now Ventus is a very good spicy balance. Ventus has this woody, smoky and leathery vibe to it, which is very macho, very good for a man, and it has a great balance of youth and of maturity because इसमें जो top note है that is very youthful, citrusy, bergamot and lemon. And जो इसमें base note है that is the strength, which is leather, which is also musk and patchouli. So these things adds depth to the perfume, and the top note adds the good and cool vibes to it. So this is Ventus, which I highly recommend, my favorite perfume in our entire range. Okay, so when we are talking about the range of perfumes, this is Coachelle. Now Coachelle we have named it after a very famous music fest called Coachella. It happens everywhere in the US. And why we have named this perfume after a music fest is because it's a burst of energy. It's very playful, and at the same time it's pretty mild in its own way. So Coachelle is a very powdery and woody. You know, the top notes and the profile is very powdery and woody, and it is इसके top note में there are very exquisite and exclusive ingredients such as rose, cashmere wood, wormwood, और इसके base में there is vanilla and freesia, which makes it, again, it gives it the depth and the width to this bottle. Coachella is the go-to perfume for everyday women wear. Okay, now let's talk about a male perfume which is very good for the parties. And we have named this perfume as, I think you can see, or maybe not, it's Husky. Now Husky is a perfume which is for the dapper male. If you're going to a party, you don't have to think anything, and even if you're going to your office and office के बाद party में जाना है, this is the perfume. Basically this is the perfume for your evening wear. If you're a lot active in the evening, Husky is the male perfume for that. And this comes in the league of Tom Ford. In fact, the formulation of this bottle is inspired from Tom Ford Oud Wood. Nowadays, we are getting a lot of queries about Oud perfumes, especially from male. Oud perfumes are in trend, and Oud or Oud
is very, very long lasting. Same with this bottle, with the juice. It's very, very long lasting. Male perfume for the evening, Husky. Okay, now let's talk about the female perfume for the evening. It's very, very, very classy. It goes with the dress. अगर आप साड़ी या traditional cloth पहन रहे हैं तो I would not recommend this perfume. This would go with a very nice western wear or any party or any evening wear. It's called Bamboo. Bamboo. Bamboo is a perfume which is very, very mild, but it has a very good projection. It has a very long lasting effect, and इसके जो profile है that is white floral, citrus and woody. I repeat, white floral, citrus and woody, and इसमें जो ingredients mix हैं that is Casablanca lily and bergamot. The base is mixed with ylang ylang, vanilla and amber, again which holds all the ingredients together and gives that immense effect after the dry down. So इसका opening is good, pretty good, but इसका जो real that interesting and that amazing feeling, it starts to come after 2 or 3 hours. So basically this perfume starts to work after 2 hours. So you should, it's a long game perfume. Now let's talk about another female perfume, which is Bloomin'. Bloomin' is a perfume which when you spray, it gives you that feeling of being cared and nurtured, of the motherly love or the love of the nature, because it is mixed with jasmine. इसका जो top note है that is jasmine and tuberose. Very good for traditional wear, for घर में कोई शादी है, कोई घर में कोई function है, या for ladies who are above 40-45 years of age. If you have to gift it to someone, to your mother or to your chachi, to your bhabhi, anyone who's above 40-45, Bloomin' is the perfume. Very, very nice, filled with jasmine and tuberose on the top. Okay, now let's talk about the male fragrance of the year. So the Blue Tree male fragrance of this season, actually, not the year. Blue Tree male fragrance of this season is Alpha M. Alpha male. We have named this perfume as Alpha male because this is for the male who's very, very active and very, very sporty, who goes to the gym, who does a lot of exercise, who's involved in a lot of physical activities. This perfume, Alpha male, is for that, because this perfume is for the youth. इस perfume में the top note is made from bergamot, the grapefruit. And in fact, grapefruit पे एक बहुत interesting research हुआ है. I tell you, grapefruit पे एक research ये कहता है कि the men who wore grapefruit perfumes were considered 10 years younger than their actual age. तो अगर आप 16 साल के हैं तो प्लीज ये perfume मत पहनिएगा, because probably you will be considered as 6 years old. Well, I was just joking. This perfume is actually for the youth, and but the research that has been done on grapefruit, that is actually a research which has been done. If possible, we'll also share it on our Blue Tree website. So Alpha M is the perfume for that, and the base is also very good. It gives a mature feeling of vetiver and sandalwood. Again, a very good balance, just like Ventus. But since this is more citrusy, I recommend people wearing in this hot, humid weather, जहाँ पे you will sweat a lot, and the profile, the properties of this perfume will be enhanced by your sweat. So again, apply it on the right points, because now you know the subtle art of wearing the perfumes and the right perfumes. Okay? So आपको एक ये भी क्वेश्चन आता होगा कि how do we launch these perfumes and who are these perfumes made by? So to answer this question, I would say कि these perfumes are made on very, very famous formulations of these famous perfumes which are sold in the market at 15,000, 5,000, 10,000 or 25,000 a bottle. And so these formulas are patented for 5 to 7 years, and after that it's open in the market. So these perfumes that we have in Blue Tree is crafted after the famous formulations of these famous bottles, and then we launch these perfumes. For example, we personally test all these perfumes on ourselves for 2 months, 3 months, 4 months. We also send it to our families and friends, and then when they tell us that it's the exact same or it's 99% from the same bottle,
then we also believe that this perfume is that strong. For example, this is the bottle, the original bottle of Burberry Body, and this is very similar. In fact, I would say 90 to 95% similar. Sorry, 90 to 95% similar to a perfume which is Coachelle. Okay, so Burberry Body is very similar to Coachelle. Similarly, Ventus is the perfume. This is very, very similar to a famous perfume called Creed Aventus. In fact, Creed Aventus is an iconic perfume. वो परफ्यूम वर्ल्ड का आई कैन से डार्क नाइट राइजेस है, जो कि everyone likes it and everyone knows how niche that perfume is. Creed Aventus, that perfume company is more than 200 years old and a bottle of Creed Aventus costs you around $300. इंडिया में मिलता नहीं है और कहीं मिलता है तो I don't know, but I saw it online and in Singapore, matched it with with our bottle and it was almost the same or even better. So I mean, these bottles which are sold for 20-25,000 is huge, but if you are getting the same experience in Blue Tree, I am very, very happy to have this kind of experience in Blue Tree. So these perfumes are also very good for gifting. Now let's just I'll end this session by talking about why it's good to gift perfumes. Is because of one reason. You would want to gift something to someone so that, you know, when they think about you, they have a smile on their face and something that reminds them of you. So fragrance is something that is always, it takes us back into the memory lane because our nose is connected with the limbic system, and limbic system is that part of the brain जहाँ पे memories and emotions store होते हैं. So it's a very, very intelligent and a wise idea to gift perfumes or gift fragrances. Buy from anywhere, buy anything which has fragrance and gift it to your receiver, and you will see how much they appreciate it. So for the same reason, for the gifting reason, we have started something new in house which we are developing. It's called perfume bouquets. Perfume bouquets. Okay, so we pack perfumes in bouquet style packaging. We also add nice messages, we add sticks, we add also some flowers, and you know, the recipient gets something, a bottle which has maybe hundreds and thousands of flowers or different ingredients in that bottle. So these are the perfume bouquets. These are some perfume packagings which are really nice with messages, happy birthday or congratulations. It's again very classy, and this is a pocket perfume, by the way. Pocket perfumes are really nice to have. आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं. I like to use it in my car because a lot of times तैयार होके कहीं निकल जाते हैं and then we forget, oh, I forgot to wear my perfume. So गाड़ी में एक perfume रहने से it's always good. Plus you can also keep it in your gym bag, in your wallet, ladies wallet, sorry, or you can also keep it in your office bag.